Ladies and gentlemen, we will be starting in the next 2 minutes. Good evening, ladies and gentlemen. Jai Jinendra. My name is KOMAL SHAH, and I'm tuned in from Nairobi, Kenya. We'll just give the audience 1 minute so that everyone settles down and then we begin. Let's begin. Today, 2nd of October, is World Vegetarian Day, as we all know. It is also Mahatma Gandhi's Janma Divas. Today, we have brought forward a very important and interesting topic. Most of us, as Jains, we would like to follow a Jain diet, but sometimes we are afraid, is it nutritious enough? Will I be able to consume foods that I need perhaps for my health? For example, if I'm deficient in vitamin A, do I have to take carrot? So it is a question that we all have, or rather, these are the questions that we all have. So let's try to understand. I will introduce our speaker for tonight. The first speaker is myself, and the second speaker is Dr. Deepak Jain. He is from Jaipur. He has his clinic for the last 20 years. He's an Ayurvedic doctor qualified from Mumbai and has a PhD in Jainism. He has written several books on Jain diet, and also he has treated many corona cases and has found very good cures to treat them naturally. Also, he will be able to give us an insight, and personally something what I would like to know, that we have heard that Ayurvedic medicines contain steroid. But I'm sure there are so many other medicines which are in the Ayurvedic field which do not have steroid. I'm sure you have many questions too. So let's try to understand many aspects that might not be very clear in our minds, but we're following a Jain diet simply because that's something that we have done for years. But when we are in a crisis, we might lose that faith and start to eat other foods, which is not perhaps required.
The essence of Jainism is to experience the soul, and of course, not to look after the body so delicately. But however, bearing in mind that in order for us to have a stable mind, we need a nutritious diet. And what is this nutritious diet? Let's try to understand. The first topic that I'm going to take is on the organ clock. The organ clock is something that nobody has created. It is happening naturally. And how does it work? Like the clock which is on our walls, similarly, at a specific time, we have a specific organ functioning in its highest ability. Let's start. In the morning, from 3 to 5, our lungs are highly active. Followed by 5 to 7 in the morning, the large intestine is very active. That's why every doctor or nutritionist will ask us, have you gone to the bathroom in the morning? Next, between 1 and 3 p.m., the small intestine is highly active. In the evening, between 5 to 7 p.m., the kidneys are highly active, and so on. So why am I explaining to you this? In Jainism, we talk about anatomy, or we talk about chovyar. Chovyar, so let's try to understand. As I mentioned earlier, that between 1 to 3 p.m., the small intestine is highly active. This is implying that the largest meal of the day is supposed to be lunch. Again, I repeat myself, that nobody has created this organ clock, no nutritionist or no doctor. It is happening naturally in the body, and this is how we're supposed to naturally flow with the natural functioning of the body. If you are unmuted, please mute yourself because it will disturb all of us. V2027, please mute yourself. So the small intestine is active between 1 to 3 p.m. And this is implying that lunch is supposed to be the biggest meal of the day. Now, I just said that between 5 to 7, the kidneys are highly active. So after 7 o'clock, water is not even digesting too well in the body. We may have read in our scriptures that after sunset, we should not be consuming water because there are many microbes, or it is bad for us in terms of building karma. But let's understand that Jainism is a very scientific religion. Sometimes out of blind faith, or sometimes when we don't understand a concept too well, we do those kriyas, but without full understanding, we might not do it for a very long time, or when we get ill, we might leave them. Without understanding that these kriyas that we are doing are actually very good for the body, for the physical body. So I will repeat myself. Between 5 to 7 in the morning, the large intestine is highly active. And because it's active, we should be drinking water in the morning. The first thing when we wake up in the morning, we should be drinking water to flush out any form of toxic material. Then we take breakfast. Take the word and break it into half. It's break and fast. We are breaking a fast, as the word is implying. So in reality, we're not supposed to be eating breakfast like a king, which is a very popular theory, unfortunately, maybe because of its own reasons, that it's very good for marketing, like certain foods. But the reality is that breakfast is supposed to be a very small meal, or it's supposed to be something which is not too heavy for the body. Bearing in mind, I am talking in general without bearing in mind that I'm talking in general with somebody who like does not have any sort of diseases. If you have a disease or if you have a problem, then this might not apply to you, but I'm just talking in general over here. Breakfast is not supposed to be a large meal. In fact, it is supposed to be one of the smallest meals of the day.
And if you read in our scriptures, it is also indicating that in the fourth era, people only used to eat once a day, which makes sense. And just look at them. They could be like Balbhadra, it could be Vasudev, it could be Prati Vasudev, or it could be ordinary people like you and I. Yet they were a lot stronger than us. So eating once a day is actually the ideal way to stay healthy. In case if we cannot eat once a day, we should be consuming only 2 meals in a day. So the first meal, preferably, bearing in mind, of course, everybody's work hours are different, so this might not be applicable to you, but I'm just talking in theory. We should be consuming lunch between 11 and 12 noon. That's the best time to take lunch. In case if your work schedule doesn't suit you, that it like doesn't matter. But keep in mind that lunch is supposed to be the biggest meal of the day. As we go ahead in the day, by 3 o'clock, our digestive system is slowly relaxing. Taking a big meal after 3 p.m. is not good for any one of us. Hence, the whole idea of eating before sunset makes sense physically. Of course, before sunset, there are other principles as well, that in the evening, there are more microbes which we can't see. And these microbes are in a huge content that we cannot even see with the naked eye. And there's a lot of hinsa which happens, which is true. But looking at it only from a body perspective, we're not able to digest food very well after 3 p.m. So what should be your evening meal? It can be soup, or it can be fruits, or it can be like semi-cooked vegetables. Preferably do not take flour or protein-based foods in the night, because it is very heavy for the body. And hence, we have just proven that the whole principle of Chovihar or anatomy is actually a very scientific principle, which is not helping us only spiritually, but it is also helping us physically to stay fit, so that the mind is fresh for us to do any form of sadhana. Now let's move on. In Purusharth Siddhi Upay, it is written that we should not be consuming meat, alcohol, and honey. Meat has protein, no doubt. For those of you who might be eating meat for protein, but it has 9% protein compared to lentils, which have 21% protein. It could be urad dal, it could be moong dal, any form of protein. It has 21% protein in it. Eggs contain a high content of sulfuric acid, which is a very strong form of an acid, which is not good for the body at all. In some books, it is written that it takes about 48 hours for eggs to digest. So along with the whole principle that killing an animal unnecessarily, imposing a lot of pain on the animal and trying to, consume it for our benefit or taste. Now, let's go to taste. The digestion begins in the mouth, and we are eating for taste, right? We do not have the correct enzymes to digest meat. If you look at the human teeth structure, it is. If you look at the teeth structure of a lion, it is actually sharp. And hence, we are not able to digest like a protein, like an animal protein, because we do not have the enzymes both in the mouth and also in the stomach. I request you to turn on your videos so at least I can see you. Otherwise, I feel that I'm just talking to myself. So we do not have the correct enzymes to digest any form of animal protein. Now, you may ask a question that if we are herbivores, can we start eating grass, like how cows eat grass? No, because that is another form of a structure, of a food structure that also we cannot digest. So there is a limitation of what we can eat. And this is very important for us to understand that whatever Acharya Bhagwan has written, he is far more intelligent
or far more learned than thousands of scientists put together, because he has got the true knowledge from the soul or from the Atma. Although scientists are doing a great job, they're trying to discover many, many things. But it is important to understand that Tirthankar Bhagwan, Arihant Bhagwan, has got Keval Gnan. He has got complete knowledge, and this is where it is slowly transferred to the Gandhars, and from the Gandhars to the Acharya Bhagwan. So Acharya Bhagwan will not be writing anything which is not in our benefit. It is important to understand, because we're living in an age where we are believing more on the scientific understanding, or the scientific half knowledge, if I dare say, compared to the knowledge given by Acharya Bhagwan, which is complete in our Shastras. So it does have protein, no doubt, meat, but it is not fit enough for the human body to digest. Now, moving on to underground vegetables. Underground vegetables, sorry, I forgot about honey. Honey, when you look at honey, it is an excrete of bees. The human excrete is mucus, stool, urine. Are we going to consume it? Of course not. I mean, just the thought of it makes us sick. But think about it. Here we're consuming the excrete of a bee, and we label it as nutritious. So what do I do when I have a cold or a cough? I might need to take honey. Instead, why don't you take lemon with a bit of jaggery powder, gur or gord, and that will really soothe your, and you can put a bit of turmeric in it. So this will really start to soothe your throat. And also remember, when you have mucus or when you have a flu, it is indicating that your large intestine is not clean. So the first thing that you should be doing is start cleaning your large intestine when you have a cold and a flu, because the two are highly, when your digestive capacity is not at its optimum, this is when we start to build up mucus in the system. Moving on to alcohol. Alcohol, as we all are aware, is a fermented food like cheese. Cheese might be delicious in taste, but it is a fermented food. So I leave it upon you to decide. If you wish to consume it, the choice is yours. Fermentation happens in the body, and due to fermentation, many diseases can take place. I will quickly go into the detoxification process, and then we slowly move on to underground vegetables, so I can elaborate a little bit more on that. When we are diseased, number one, we should not panic, because the first thing we need to understand that the body wants to eliminate. Sometimes when you have a fever, you should not panic, because fever is a sign of the toxic material burning in the system. So rather than suppressing it with heavy antibiotic, try to drink a lot of water, clean your large intestine with an enema pot, or try to take a natural laxative like isabgol, or like see your naturopath or a nutritionist. They might be able to help you to understand if it is a healing crisis or is it really something wrong in the body. So number one, do not panic. Whenever there's any disease, most of the time there's an overload of toxic material in your large intestine. If you've got heart condition, clean your large intestine. If you have got arthritis, clean your large intestine. This is very, very important, because it should not get to a case where you have been following a Jain diet for maybe 3/4 of your life, and all of a sudden you have a disease, and now you have to take allopathic medicine, which might have all the non-vegetarian items in it. So the choice will always be yours, whatever medicine you wish to take. But I'm only giving you a brief insight of what can be an alternative to help yourself and not to consume any form of non-violent products. Next, you should be cleaning your liver. The liver performs over 200 separate functions. These days, it has become very, very common
that if you're deficient in vitamin B12, go take a jab. If you're deficient in vitamin D, and I don't know how in a country like Kenya or India, we can be deficient in vitamin D when there's ample sunlight. But however, in case if you're deficient in vitamin D, you need to understand that vitamins and minerals work all together. So rather than first targeting your system by giving it a jab, instead, what you should do, you should clean your liver. And it is very important to take a test to first know what you're deficient in. Do not start to take supplements of any kind simply because after a certain age, it might be written on the bottle that it should be consumed. Take a test. If you're deficient in vitamin A, only take vitamin A. And another important point for you to understand, anything which is made in the laboratory, it is not 100% bioavailable, right? Please mute yourselves because you're distracting us. So when it is made in the laboratory, kindly understand that it is not 100% bioavailable, and only a certain percentage the liver can use it. For example, vitamin A, the liver can only use 30%, 70% of the supplement, the liver has to push it out. So it is better that you consume fruits and vegetables in a good quantity and at the right time, not at the wrong time, because when you consume it at the wrong time, this is the problem. This is where indigestion happens. After you clean your liver, you should clean your blood. Again, blood can be cleaned at home using natural leaves like green leaves, which I'm not really indicating right now because I do not know who my audience is and what problems they might be having. But it can be done easily at home. So you can avoid yourself from getting to a stage where the body is building up a lot of toxic material and eventually you have to take drastic measures by consuming a pill for the rest of your life. Rather do it, or if that is too difficult, do it once in a year. But try to detoxify your body. This way, you will be preventing yourself from many diseases and you will be able to continue with the Jain diet you might be taking, and it might not result into you taking Hinsak, allopathic medicine. Let's move on to the underground vegetables. It is written in this book, The Natural Food of Men. This is written by an American author. He has written that underground vegetables do not get sunlight and hence they are less nutritious compared to food grown over the ground. So this is a very important point. If you might be deficient in vitamin A and you might need carrot, remember there are so many other substitutes that you might not necessarily need to take underground vegetables. If you look at potato is generally referred to as empty calories. It doesn't do good, it doesn't do bad. So you're not really benefiting apart from the taste that we all have acquired for over the years of consuming potato. And these days, there are so many substitutes. If you want to eat chips, as we call in Kenya, in certain countries, you might be calling it French fries. You can be making it of a vegetable called banana, or what we call in Kenya, matoke. And believe me, it tastes really nice. It tastes so good that you don't actually miss the taste of the actual potato. Moving on to another topic, we have special tithis like Atam and Chaudas, as we call in Gujarati, and as you call in Hindi, Ashtami and Chaturdashmi. Now, these two are known as eternal festivals or eternal tithis, correct? If you look at the water in the ocean, on the 8th and on the 14th day, on these 2 days, the water content naturally rises in the ocean. Remember,
the body is 70% water. And hence, we are advised in our Shastra to consume foods which have got less water. For example, vegetables have got more water compared to lentils. And so we are advised to consume lentils because on these 2 days, the water content naturally in the body is a lot more. And because it is a lot more, we should not be adding more water because this will make the body diseased. So this is the scientific reasoning behind why we should be consuming lentils on Atham and Chaudas compared to eating green vegetables or maybe fruits. So this is important again for us to understand that, of course, we have the whole spiritual explanation that these 2 days are good sadhana, and it is good to be quiet and try to look within. But also it is written in Shastra that we should be avoiding foods which have got more water on these 2 days. Fasting. Fasting is again an important principle. Fasting is not the same as starving. Fasting is not the same as starving. Fasting has a positive outcome to it, and starving has a negative outcome to it. Fasting brings us closer to God, and starving takes us away from God. So fasting is a very divine way of going within. What is the correct way of fasting? You might have eaten, for example, at 6 p.m. or 6:30, that might be your last meal. The next morning, you are taking your first meal, maybe at 8 o'clock. So this is a very long period. So this is one fast. You could say this is one form of fasting, where you have fasted overnight, say approximately 12 to 16 hours you have fasted. So this is one way of fasting. When you break your fast in the morning by taking break fast, do not consume a heavy meal. Try to keep your meal light. First, start with water. Try to take a good quantity of water. Don't force yourself. Try to take a good quantity of water, what your body can. Another form of fasting is abstaining from food throughout the day. Now, this works wonderfully well on the body because it gives your digestive system a rest. And because your digestive system is now at rest, what happens is that the other organs can now start cleaning themselves, which is very, very important. During fasting, you might experience, after maybe 2 or 3 days, you might experience weakness in the body. Now, what does this mean? This means that the energy which normally used to be in our limbs and in our hands, legs, is now been shifted to other organs where now the cleaning is happening. So there's nothing to be afraid of. You simply need to rest. You need to rest, you need to relax, and you need to be very calm. Rather than panicking, oh, now I don't have energy, I'm feeling weak, don't panic. Rather, try to be calm and try to chant maybe something like Om, which is very useful. So these are the few tips that I've given you. I will just quickly do a recap so that we are both on the same page. I started off with we should not be consuming meat, eggs, or any form of alcohol or honey. For the obvious reasons, they have got a large number of microbes and the protein structure does not get digested. Secondly, the underground vegetables have a low nutrient content. This is written by an American author in this book, The Natural Food of Men, because there is no sunlight going under the ground and hence there is a less nutrient content compared to overgrown vegetables. And thirdly, we should be detoxifying ourselves regularly to be avoiding ourselves from getting diseased and getting problems later on in life. Fourthly,
we should be consuming, which I had forgotten to talk about earlier when I was talking about Atam and Jyotis, that we should be consuming boiled water. If you read our Puran, it is saying from the time of Bharat Chakravarti, they have been doing this. Now remember, these people were a lot smarter than you and me. So they've been doing this for a very, very, very long time. So there's a reason to it. Boiled water is clean water. Sometimes, maybe when we've gone camping or maybe when we're on a trip, when we cannot boil water, in our Shastra, there's an alternative. Put some laving or long or clove in your water. This will keep your water fresh for 6 hours. Then remove it and then add new clove in your jar of water or maybe in your bottle of water and consume it. So this way your water will be clean. Again, the body is 70% water. Hence, the quality of water is far more important than the quality of food. And in this day and age, we're stressing more on food than on the other aspects of hygienic living. It could be water, it could be air, or it could be sunlight. So these are a few points that you need to understand, that why have these points been written in our Shastras for maybe billions of years? Of course, it has only been about 2,500 years since Mahavir Bhagwan has attained Nirvana, but the Jain principles have been existing since infinite years. And these are the natural laws of nature which nobody has created. We simply need to follow them so that we are healthy. One important point I will repeat before I finish my speech, that in the fourth era, they were eating less, yet they were far more healthier than we are. They were eating 1 meal a day. And in the fifth era, maybe we're taking 5 meals a day. So this is up to you to now think about what you wish to do. And you can, of course, make your own choices. Without further ado, I now call upon Dr. Deepak Jain, who again has 30 minutes, followed by a Q&A. जय जिनेन्द्र सभी को। नमो जिनानम नमो जित भवानम। मित्रों, ये वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ फाउंडेशन केनिया द्वारा आयोजित इस वेबिनार में मैं जैन श्रावकाचार अपने जैन आहार से हमें संपूर्ण पोषक तत्व किस प्रकार मिल जाते हैं, इस संबंधी विवेचना करूंगा। जैन आहार जो हमारे वर्षों से ऋषि मुनियों ने बताया है, तीर्थंकरों की दिव्य देशना से चरणान योग के ग्रंथों में बताया गया है, तो ये जैन फूड्स की न्यूट्रिटिव वैल्यूज और इनके माध्यम से हम हेल्थ को किस प्रकार अच्छे से रख सकते हैं, ये सब हम यहाँ पर थोड़ा सा आधा घंटे के समय में कंप्लीट में विवेचना करूंगा और बहुत सारी जानकारी आपको इस संबंध में दूंगा। देखो, ये तो एक फैक्ट है कि जैसे जैसे डेज निकल रहे हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, अनेक अनेक प्रकार से खान पान में चेंजेस तेजी से हो रहे हैं। आज के इसमें हम अगर देखते हैं तो हर व्यक्ति, जैसे हम पहले कहें कि भाई एवरेज आयु क्या थी, कितने इयर्स तक हम जीते थे, तो पहले के बुजुर्ग हमारे, आपको ऐसे अनेकों लोग मिल जाएंगे जो 90-90, 100 साल तक जीते थे और बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते थे। आज मैं मेरी डेली 100-150 पेशेंट तक की ओपीडी चलती है और पेशेंट्स को देखता हूँ, और ऐसे मेरे बुजुर्ग मित्र आते हैं जो 91 इयर्स के हैं, लेकिन 19 इयर्स के मतलब बॉयज से भी ज्यादा एनर्जेटिक और मजबूत फील करते हैं। तो यह एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे जैन आहार में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जिन्हें हम अवॉइड करते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो हम खाते हैं उससे हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, उसकी चर्चा मैं इस सेशन में करूंगा और बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी काम की मिलेंगी।
देखो आज के इसमें क्या हो गया कि खान पान में हम जो शाकाहार और मांसाहार का कंपैरिजन करें तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। ये एक ट्रुथ है कि भाई जब हम जैसा खान पान करते हैं वैसे ही हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स पर और हमारे टोटली बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन पे बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आते हैं। और ये सेरोटोनिन डोपामाइन वगैरह जो अपने ब्रेन में होने वाले हॉर्मोन्स का लेवल है इनमें भी चेंजेस आते हैं। तो ये खान पान से बहुत ज्यादा हमारे ऊपर असर रखते हैं। और जितने भी मांसाहारी तत्व हैं, डायरेक्ट मांसाहार तो कोई जैनी नहीं करता है, लेकिन आजकल ई नंबर जिलेटिन युक्त मेडिसिन न्यूट्रिशंस के नाम पे जो समझ लो कि बहुत सारे कंटेंट्स वाली मेडिसिन आती हैं वे एनिमल डिराइव्ड होती हैं, और उसके माध्यम से मांसाहार हमारे जीवन में धीरे धीरे एंट्री करने लगता है। तो हम यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे कि हम नॉर्मल अपने जैन फूड से ही, अहिंसक अन्न से ही किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आहार की, फल की और मर्यादित भोजन मतलब एक्सपायरी ऑफ फूड का सिद्धांत भी बताऊंगा। हमारे जैन दर्शन में मर्यादाएं बताई गई है। अभी जैसे हमारे इधर इंडिया में बारिश के दिन चल रहे, 3 दिन की मर्यादा है आटे की, दाल, ये मसाले वगैरह की, ये सब इसके बारे में भी डिस्कशन आएगा। अभी पहले हम जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए तो उसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब ये फैट्स, और खनिज लवण मतलब मिनरल्स, इनकी नेसेसिटी बॉडी को होती है। और इनकी अनेक प्रकार से जो आपूर्ति है वो अभी हमारे पहले कोमल जी शाह इन्होंने जो वक्तव्य दिया काफी अच्छे से उन्होंने बताया कि सब अपने को सोयाबीन या बाकी सब चीजों में, दालों में वगैरह मिलते हैं। मैंने उसका यहाँ थोड़ा सा आपके लिए यह कैलकुलेशन, जो मेरी पुस्तकें हैं 3, जिसमें अहिंसक आहार स्वास्थ्य का आधार, यह इस पुस्तक के आधार से ये मैंने यहाँ पर जो आपको थोड़ी सी यह स्लाइड दिखा रहा हूँ कि हमारी दालों में देखो ये सब प्रकार के कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हमारे इसके लिए फंक्शनिंग के लिए चाहिए। कैलोरीज मिलेंगी, कितनी कैलोरीज चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को, मिनिमम समझ लो कि ज्यादा अगर उसका घूमने फिरने का काम नहीं है तो पुरुषों में 3000 कैलोरीज और फीमेल्स में 2000 कैलोरीज नेसेसिटी होती है डेली यूज के लिए, डेली फंक्शंस के लिए। और इससे हम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसका अगर कंजम्पशन करते हैं तो वह हमारे लिए काफी अच्छी लगती है और पूरा हम सक्रिय जीवन जीते हैं। तो ये मैं सबकी रीड नहीं करूंगा, ये सामने आपके डिस्प्ले करते जा रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी सब दालों में भरपूर मिल जाते हैं। प्रोटीन्स के लिए चाहिए तो बिना अपने सब शाकाहारी प्रोटीन्स में ये चीजें मिल जाती हैं, भरपूर मिलती हैं। देखो ये सब चीजें यहाँ पर अरहर की दाल, मसूर की दाल आदि मैंने दिए हैं। अब इंग्लिश में आप इसे जरूर समझ ले अपने हिसाब से, तो इनमें सब में मिल जाते हैं। इसके सिवाय अपने को फैट्स चाहिए, नेसेसिटी भाई, एक उचित शरीर में स्टोर फैट्स के रूप में अगर वो रहती है तो एनर्जी, उपवास वगैरह करते हैं या किसी प्रकार से भी हम भूखे कभी रहते हैं तो वह अपने बॉडी में अपने आप ही उसका एक उत्साहपना, कैलोरीज बन के एनर्जी बनी रहती है। तो यह उसके लिए फैट्स की भी नेसेसिटी तेल और घी से भरपूर मिल जाती है। और इसमें भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए ये सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वगैरह जो भी इसमें होता है तली हुई चीजों में, भाई कोई भी चीज एक बार तल ली हमने तो उस तलने के बाद में उसको फिर से नहीं यूज करना चाहिए तेल को, क्योंकि वो पूरा का पूरा समझ लो कि कोलेस्ट्रॉल रूप में या फिर हमारे नसों को ताकत वो कड़क करने में या उनको आर्टरीज को थिक करने में, अंदर प्लाक जमाने में काम वो चला जाता है, तो नॉन सैचुरेटेड हो जाती है वो। तो इसलिए वैसी फैट्स हमें यूज नहीं करना चाहिए, तला हुआ तेल फिर से प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये मिनरल्स डेली चाहिए, ये भी सब आपको देखो पूरे के पूरे इसके फंक्शंस भी दिए मैंने, इसमें खाद्य के स्रोत भी दिए किस किस में कैसे मिलते हैं। और ये जितने भी अपने शाकाहारी स्रोत हैं इनमें सब मिलते हैं रेगुलर। इसकी चर्चा अपन करेंगे। यहाँ तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि ये मेरे पास पूरा मैटर है और मैं अपने टाइम लिमिट में इनको सब कंप्लीट कर लूंगा। लोग बोलते भाई B12 है, B6 है, ये
इसमें शाकाहारियों को कम मिलते हैं या मिलते नहीं हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि ये अपने वेजिटेबल्स में कैसे मिल जाते हैं। नॉट नेसेसरी कि भाई ये ठीक है आतों में फॉर्म होते हैं, तो हमें ऐसे नेसेसिटी नहीं है कि भाई किसी के बकरे की या बछड़े की रैनेट्स वगैरह से ये B12 B6 लेने हैं। आप इसको फलीज, जितने भी सीरियल्स आते हैं, फलियां आती हैं, लेग्यूम्स आते हैं, इनके माध्यम से अपने आंतों में ये भरपूर बन जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपके हैं, दूध वगैरह है, इनके माध्यम से मिलता है। अंतर मुहूर्त का दूध वह टोटली एब्सॉर्बेबल और भक्ष्य है, और उसमें B12 वगैरह के रेशो मिल जाते हैं अच्छे से। हमारे ड्रम स्टिक, सहंजना, सहंजना की पत्तियां, सहंजना की फली, दोनों में भी विटामिन B12 B6 के रेशो अच्छे होते हैं। तो इस तरह से शाकाहारी स्रोतों में सब मिलता है। इवन ये जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, अगर आप गीली मिट्टी में उस बिना चप्पल के अर्थात पैरों से अगर घूमते फिरते हैं, तो इससे भी अपने आप ही स्किन में पर्टिकुलर वह एब्सॉर्प्शन होता है और B12 का रेशो बनता है। बारिश में गिरता है विटामिन B12, तो ये जो बारिश का नमी वाला पानी होता है, बारिश के पानी में होता है, इसमें भी B12 और B6 मिल जाते हैं। ये सब रिसर्चेस आप गूगल पे अगर करेंगे तो इन पे आपको पॉजिटिव इनके सब मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाह रहा हूँ कि अपने ये जो खान पान के हैं, इनको अपने को बिल्कुल इसी में सभी चीजें मिल जाती हैं। तो ये इसमें अपना एक विशेष बात ये है शाकाहारी लेने में कि सात्विकता। अब हमारे आयुर्वेद से मैं इसको पुष्ट करता हूँ सबसे पहले कि हमारे आयुर्वेद में सिर्फ स्वास्थ्य मतलब फिजिकली फिट रहना इतना सा नहीं है, मेंटली भी फिट है होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है और फिट है, मस्त है। मैं एक सूत्र संस्कृत में सुनाना चाहूंगा। समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। हमारे आयुर्वेद के अनुसार दोष, धातु, मल, इनकी सबकी क्रियाएं सम्यक होते हुए आत्मा की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता जरूरी है स्वस्थ रहने वाले को। आज आप जितने भी बीमारियां देख रहे हैं इस दुनिया में, 99% के 100% ही कहूंगा मैं, मानसिक स्वास्थ्य, टेंशन, स्ट्रेस, निराशा, डिप्रेशन कहेंगे जिसे, इसके कारण ये सब पनप रही है। सबसे पहले इन मानसिक संवेदनाओं के कारण हमारे डाइजेशन पे असर आता है, एसिडिटी, गैसेस बनना शुरू होती है, भूख कम होने लगती है, और फिर भी हम खाने से तो चुकेंगे नहीं, परिवारजन खिलाएंगे जबरदस्ती, और खाना एक हमारी खुद की हॉबी भी है, तो कुछ ना कुछ खाएंगे। और फिर बाद में वो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हम उसे आम या अर्धपक्व अपक्व अन्न बोलेंगे, या हम जिसे कहेंगे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, जिसकी वजह से ये अनेक प्रकार की फिर आगे बीमारियां होती हैं। तो ये हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सब रोगों की जड़ है मन में स्ट्रेस, तनाव, चिंता। तो इससे तनाव चिंता करने वाले भी आहार होते हैं। आप जितने भी ये, जैसे कि अभी कोमल जी ने बताया ही था कि अंडरग्राउंड्स वाले जितने भी हैं, या हम जिसे जमी कंद कहें, जमीन के अंदर रहने वाले जितने भी पदार्थ है, आलू, गाजर, मूली, प्याज वगैरह, ये सब में जितने भी इसमें सूर्य की किरणें नहीं जाने के कारण तामसिकता होती है, और जो तीखे, तेज मिर्च, चटपटे वगैरह जो हो जाते हैं उनमें राजसता आती है। और जितने भी बाकी ऊपर होने वाले, जमीन के ऊपर होने वाले हैं, लौकी, गिलकी, तुराई आदि ये पदार्थ है, केला वगैरह है, इनमें, फलों में, सब में सात्विकता मिलती है। अब इसके साथ में हमारा मन का संबंध होता है और शरीर का भी संबंध होता है। न्यूट्रिशन से तो शरीर चलता है, वो न्यूट्रिशन तो आप चाहे शाकाहार से लेते हो चाहे मांसाहार से लेते हो, न्यूट्रिशन तो दोनों में मिलता है। लेकिन मांसाहार से लेने में जो बाकी के निगेटिव हॉर्मोन्स होते हैं, जो उसमें तामसिकता होती है, वो हमारे ब्रेन में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषायों के संवेग पैदा करते, काम वासना उत्पन्न करेंगे, और उसके माध्यम से राजस तामस गुण बढ़ेंगे, और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स, सिक्रीशंस डिस्टर्ब होंगे, और हमें बीमारियां होंगी। मन के साथ में शरीर का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे ये तनाव युक्त, क्योंकि जिनका भी मांस लिया जाएगा वो कोई खुशी खुशी मांस नहीं देगा। मरने के लिए इस दुनिया में चाहे 2 इंद्रिय इल्ली हो,
या पंचेंद्रिय मुर्गे या सुअर बकरे जिनके भी मांस प्रयोग में लिए जाते, तो वह सब क्लेश पूर्वक मरते हैं, सुख से नहीं मरता है। तो उसके जो जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं उस मानसिक मरने के काल में, वो सब हमारे बॉडी पे असर करते। चाहे हम मेडिसिन में ऐसे टॉक्सिन्स वाली मेडिसिन लेंगे जो एनिमल डिराइव होगी, तो वो भी हमारी मानसिकता पे निगेटिव असर करेगी ही करेगी। और हमारे फिर उसकी वजह से वासनाएं बढ़ना, क्रोधमान माया लोभ बढ़ना, बेचैनी बढ़ना, घबराहट बढ़ना, स्ट्रेस बनना, एंजाइटी रहना, ये सब चीजें शुरुआत हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एनिमल डिराइव्ड कोई भी मेडिसिन या खान पान में कोई भी पदार्थ आना ही नहीं चाहिए। उसके माध्यम से अगर उस एनिमल की उस समय की सेंटिमेंट्स निगेटिव रहे हैं, तकलीफ देह रहे हैं, तो नियम से बॉडी को अपने कहीं ना कहीं निगेटिव असर लाएंगे ही लाएंगे। जहां मन निगेटिव हुआ वहां बॉडी अपने आप में सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स डिस्टर्ब होकर के ये इंसुलिन कम बनना, थायराइड का थायरोक्सिन कम बनना, और ये ब्रेन में समझ लो सेरोटोनिन वगैरह के रेशो कम होना, और ये सब चीजें कम होने के बाद में हमारा शरीर रूपी यंत्र यह खराब होने लगता है। मैं कोट करना चाहूंगा इस वक्त पूज्यपाद आचार्य का समाधि तंत्र ग्रंथ, जिसमें वे बोलते हैं कि भाई हम आत्मा इच्छा करते हैं, राग द्वेष करते हैं। इस राग द्वेष के कारण एक वायु, एयर पर्टिकुलर रूप से पैदा होती है, आत्मा के प्रदेश सकंप होते हैं, उससे वह वायु सकंप होती है, उस एयर में वाइब्रेशंस होते हैं, और उस एयर से ये अपना शरीर रूपी यंत्र पूरा चलता है। तो ये 103 नंबर की उसमें श्लोक दिया हुआ है समाधि तंत्र में। आचार्य पूज्यपाद स्वामी आयुर्वेद के बहुत जबरदस्त ज्ञाता थे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म इन आयुर्वेदा ऐसी एक पीएचडी हुई है, मेरी पीएचडी तो पंचास्ती का संग्रह पर है। तो उसमें ये सब दिए कि भाई जैन आचार्य आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, स्वास्थ्य के विज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। आज आप हमारे मुनिराजों का प्रतिमा योग, आतापन योग के बारे में अगर सोचते हो, आज जो पूरे विश्व में कोविड कोरोना हुआ है उसमें एक रिसर्च आया कि जिनके विटामिन डी के रेशो कम रहे हैं वे कोरोना कोविड से ये सफर ज्यादा हुए हैं। तो यह हमारे आतापन योग में जो पर्टिकुलर मुनिराज धूप में ही रह के तपस्या करते हैं, और उसमें जो विटामिन डी का रेशो सूर्य की रोशनी से मिलता है, वो 95% ऑफ नेसेसिटी ऑफ बॉडी विटामिन डी की सूर्य की रोशनी से हो जाती है, प्रोवाइडेड इट शुड बी टेकन बाय ओपन स्किन, तो बॉडी पे क्लोथ्स नहीं होने चाहिए। तो वह मुनिराजों के माध्यम के खुले भाग से अपने आप ही बहुत अच्छे रेशो में विटामिन डी रहता है, और वे लॉन्ग पूरे दीर्घायु जीते हैं और स्वस्थ जीते हैं, क्योंकि विटामिन डी बोन्स में स्टोर होता है और आजीवन लाइफ टाइम तक हमारे लिए मजबूती और उत्साह प्रदान करने में निमित्त बनता है। तो हमारे जैनाचार की एक एक क्रियाएं आप देखेंगे तो उसमें सब चीजें, भाई जंगलों में रहते हैं मुनिराज, क्यों रहते हैं जंगलों में? कह रहे आत्म साधना के लिए, लौकिक संपर्क से बचने के लिए, ये तो अध्यात्म का पक्ष है ही। हम आपको ये भी बताते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से ऑक्सीजन का रेशो आपको जंगलों में सबसे अच्छा मिलेगा। जंगलों में जो प्लांट्स है, आम्रवन, चंपकवन, या जैसे जैसे जो जो औषधि युक्त भी प्लांट्स होंगे, उनके एयर से जो आपको ऑक्सीजन जाएगा वो आपके पूरे बॉडी के लिए, इवन ये इनहेलिंग कैपेसिटी अच्छी हो, जिसका गहरी सांस लेने की आदत हो, तो उनके लंग्स, फेफड़े कभी भी जीवन भर में खराब नहीं होंगे। कोरोना काल में किसी को कोरोना हुआ और वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन में सही हुए हमारे आयुर्वेद से, और वो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ये भस्त्रिका, 4 प्रकार के प्राणायाम करके उन्होंने इनहेलिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन अच्छी रखी थी। तो उसकी वजह से वो उनका फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो उनका सीटी स्कोर वगैरह भी रेज नहीं हुआ और जल्दी वो क्यूर हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रेश एयर वो हमारे मुनिराज वन जंगलों में जो लेते हैं उसके कारण, या हमारे तीर्थ क्षेत्रों में आप आते हैं वहां पर अगर ऐसी हवा फ्रेश मिलती है बिना पॉल्यूशन वाली, पॉल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अपने व्हीकल से, पेट्रोल से जो जितनी निकलती है, और कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है। तो इसलिए वन जंगल में रहने से वो ऑक्सीजन रेशो, हवा, और दूसरा मैंने बताया धूप, तीसरी बता रहा हूं मैं पानी।
जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी बोलने की के लिए बताया है। तो वो पानी का असर बॉडी पे बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पानी में, इधर हमारे जयपुर में सांगानेर वगैरह में इसमें फ्लोराइड के रेशो ज्यादा है, तो लोगों के बोन्स टेढ़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पानी का असर बोन मतलब सब पे, पूरे बॉडी पे आता है। तो जहाँ पानी में मिनरल्स अच्छे हैं, नेसेसिटी जो बॉडी को होती है वो पॉजिटिव मिनरल्स अच्छे हैं, तो वो बॉडी को अच्छा ग्रोथ करते हैं और उनकी ताकत अच्छी रहती है। तो जो छान के पानी पीने की पद्धति है, तो उसमें तो आप निश्चित ही जानते हैं कि छोटे छोटे द्विइंद्रिय त्रसादी, वे तो नियम से हम छान करके और उनको बिलछानी देकर, जीवानी देकर बहा देते हैं। तो दयामूलक परिणाम होने से पॉजिटिव हॉर्मोन्स अपने अच्छे होते हैं, और साथ में वह जीवों को बहाने से और जीव रहित पानी पीने से हमें अनेक प्रकार के एब्डोमिनल डिसीज हैं, जितने भी आजकल आव हैं, या समझ लो कि प्रवाहिका है, अमीबाइसिस वगैरह केसेस हैं, या डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीजों से हम अच्छे छने हुए पानी से पीने से बचते हैं। तो ये सब हवा, पानी, धूप और इन सब की लाइफस्टाइल, मुनिराज वॉकिंग करते हैं हमारे डेली डे, मतलब विहार करते हैं। किसी भी गांव में, छोटा गांव हो तो 5 दिन, बड़ा गांव हो तो 7 दिन, ऐसे उनके रुकने के होते हैं, और उसके बाद में वे नियम से विहार करते हैं। तो उसके कारण जो वॉकिंग है, वॉकिंग के कारण सब पूरे एब्डोमिनल से लेके पूरे बॉडी में वाइब्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन नंबर 1 होता है, और सभी प्रकार के जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो सब निकल जाते पसीने से। तो इसलिए वह वॉकिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। तो उसके कारण भी सब उनका टोटली बॉडी सिस्टम बेस्ट रहता है। तो ये हमारे जैन श्रावकाचार में बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं। 5 अभक्षों का जो वर्णन है, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य अभक्ष, ये गोमूत्र और जितने भी एनिमल वाले मल मूत्र के मेडिसिन भी बनती हैं, और बहुत सारे इनका प्रयोग आजकल चीजों में हो गया। मांसाहार में तो समझ लो सब कुछ, जैसे अभी उन्होंने, कोमल जी ने शहद के लिए, हनी के लिए बताया कि सब उसमें एक्सक्रीशन और वो सब मधुमक्खियों का सब आ जाता है। ये सब टॉक्सिक होते हैं, ये नियम से बॉडी में कोई ना कोई डिसीज पैदा करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए अनुपसेव्य अभक्ष्य जो हमारे जैन दर्शन में सिद्धांत दिया है कि किसी प्रकार का मल मूत्र का पीना करना, उसमें या उसकी औषधि लेना, वे सब जीव हिंसा सहित होते हैं, प्लस उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, और वह हमारे बॉडी में अनेक प्रकार की घातक इन्फेक्शंस आगे चल के पैदा कर सकते हैं। कदाचित नहीं किया किसी को, लेकिन होने के चांसेस रहते हैं। मित्रों, ये तो एक सिद्धांत है कि हमारे जितने पूर्वज थे वे हमसे मजबूत थे, और बहुत अच्छे जीवन शैली को जीते थे, निष्फिक्र जीवन, टेंशन फ्री लाइफ जीते थे, और दीर्घायु जीते थे, खुश रहते थे। और आज हम इतने सारे विज्ञान के आविष्कारों में और लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल और ये सब रेडिएशन के बीच में रह रहे हैं, तो साथ में शरीर पे उसका असर आता ही आता है। यहाँ तो अपना प्रयोजन यहाँ की भाई खाने पीने में सावधानी की दृष्टि से देखा जाए, तो अब हमें ये इससे सावधान होना है कि मांसाहारी तत्व अलग अलग रूप से हमारे जीवन में आ रहे हैं, मेडिसिन के माध्यम से आ रहे हैं, खान पान में प्रिजर्वेटिव के नाम से आ रहे हैं, इमल्सिफायर हैं, स्टेबलाइजर हैं, ये ई नंबर युक्त होते हैं। हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा लोगों में वो परफेक्टनेस नहीं है, बहुत से ई नंबर नॉन वेज से डिराइव्ड होते हैं और उनको ग्रीन सिंबल मिल जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन शैली में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और जिसका अहिंसा धर्म का पालन दयामय परिणाम रहेगा, उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है, उसको फिर वे समयसार नियमसार के आत्मानुभूति के बोल वे असर करते हैं। इसलिए जैन दर्शन में जैनियों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कहो या पात्रता कहो, कि क्या हम कहें कि समयसार सुनने का श्रोता बने, या क्या हम जैन दर्शन के अध्ययन करने वाले बने, तो अष्टमूल गुण बताए हैं। और अष्टमूल गुण में लगभग 30 श्रावकाचार ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है, और उन 30 श्रावकाचार में से 24 श्रावकाचार में मध्य मास मधु त्यागम सहानुव्रत पंचकई, ये तो सबसे पहले समंत भद्राचार्य ने बताया। 30 के 30 ग्रंथों में मध्य मास और मधु, शहद, इन तीनों का त्याग तो कठोरता से करने के लिए, दृढ़ता से करने के लिए बताया है, क्योंकि इनके सेवन करने वाले के दया में परिणाम हो ही नहीं सकते, मृदु परिणाम हो ही नहीं सकते, फिर उसको समयसार वगैरह के आत्मानुभूति की बातें उसको यथार्थ समझ में आ सकती है।
और बाकी फिर किसी ने पंच मकार का त्याग कराया, किसी ने जल गालन का नियम दिया, पानी छान के पीने का, रात्रि भोजन त्याग का दिया। रात्रि भोजन को मांसाहार जैसा ही कहा गया है। अल्ट्रावायलेट रेज के बाद में जितना भी कुछ हम करते हैं खाने पीने में, तो उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो होते ही होते, माइक्रोब्स कहो या सूक्ष्म बैक्टीरिया कहो, वायरस कहो, फंगस कहो, कुछ ना कुछ सूर्यास्त के बाद में ये डेवलपमेंट होती होती जो स्वास्थ्य को हानिकारक है। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम बोलते हैं कि जैसे ही सनसेट हुआ वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स के एंजाइम्स वगैरह वो सिक्रीशन उनका कम हो जाता है। इसलिए जो रात्रि भोजन करते हैं उनको एसिडिटी, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन इनकी तकलीफ ज्यादा पाई जाती है। और हमारे पुरुषार्थ सिद्धियोपाय का मैं भी कोट कर देता हूँ कि भाई आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन होता है वह जिस प्रकार हिरन जो है घास देख करके तुरंत छोड़ के भग जाता है, इतनी उसकी गृद्धता होती है। कोई भी आवाज हुई तो हिरन तुरंत भग जाता है, डियर बोलते हैं जिसे। और जो बिल्ली होती है, कैट, वह चूहा पकड़ती है तो वो इतने मजबूती से पकड़ती कि उस पर डंडा भी कोई मारे ना तो भी वह उसे छोड़ती नहीं है। ऐसी रात्रि भोजन करने वाले की गृद्धता ज्यादा है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई मांसाहारियों के दांत से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, ऐसे ही शाकाहारियों के जो टोटली सिस्टम है, आप देखेंगे बहुत सारे जितने भी शाकाहारी पशु हैं ये रात्रि भोजन नहीं करते हैं। वो तो अब हम उनको देते ही रात को हैं तो फिर वो खाने लग जाते हैं, दिन में भूखा रखेंगे तो। 99% शाकाहारी पशु स्वाभाविक रूप से दिन में ही भोजन करते हैं। इसलिए यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और टोटली बॉडी सिस्टम इस प्रकार का है कि हम इसमें दिन में ही भोजन करें। और वह गृद्धता दिन में भोजन करने की हिरन के घास खाने जितनी है, और बाकी जो रात्रि भोजन करते हैं उनकी जो उसमें आसक्ति कहो या गृद्धता है वह वो बिल्ली के चूहे पकड़ने जैसी है। इसलिए रात्रि भोजन को भी मूल गुणों में ग्रहण किया गया है। तो इस अपने अवसर पर मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जैन श्रावकाचार में जितनी भी बातें कही गई हैं वे स्वास्थ्य की दृष्टि पे 101% करेक्ट बैठती हैं। अष्टमूल गुणों के बाद में जो 6 आवश्यक कर्म हमारे दिए हैं, जो देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति, ग्रस्तानाम षटकर्माणि दिने दिने, ये टोटली मेंटल आरोग्य, मेंटल आपका समझ लो कि स्वास्थ्य को नॉर्मल करने वाली चीजें हैं। पूर्ण रूप से प्रसन्न रहने के लिए हम देव पूजा करते हैं तो अपने आप ही कषाय मंद होती है, बहुत सेटिस्फेक्शन होता है और सभी प्रकार से हमारे लिए ये काम करती है। ऐसे ही गुरु उपासना है, दान देना है, किसी को देते हैं तो अपने आप ही पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में डेवलप होते हैं। ये जो अपने इसमें मंदिर वगैरह में घंटा वगैरह होती है, इनसे भी पॉजिटिव हार्मोन्स अपने बॉडी में डेवलप होते हैं, पॉजिटिविटी का संचार होता है। और जैसे कि हमने बताया सेरोटोनिन, डोपामाइन वगैरह जो अपने बॉडी के सिर में जो नेसेसरी फीलिंग्स हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, ये सबका डेरिवेशन अच्छा होता है। तो मेरा तो यहाँ पर आप सब लोगों से यही इस प्रसंग पर संबोधन है कि शाकाहार वह जैनाहार अपने आप में पूर्ण आहार है, पहली बात। दूसरा, जैन चर्या जितनी भी है वह नियम से हमारे लिए आरोग्यदायी है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे मुनिराज होते हैं। और उन साधु भगवंतों के जैसा ही हम श्रावकाचार अल्प भूमिका में पालते हैं, वे पूर्ण रूप से पालते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसको पालते हैं तो हमारा मेंटली और फिजिकली दोनों ही फिटनेस अच्छी होती ही होती है। और यह सब आजकल के वैज्ञानिक रूप से, अभी इन्होंने अष्टमी चौदस का बताया, अष्टमी चतुर्दशी के लिए मेरे पास में इस बुक में मैंने लिखा हुआ है कि भाई यह जर्मनी और अमेरिका की रिसर्च की, उधर की इंस्टीट्यूट का वो रिसर्च है कि उन्होंने पर्टिकुलर पेशेंट्स के ऊपर देकर के बताया जैसे सूर्य का बॉडी पे असर होता है ऐसे चंद्र का भी होता है। तो उसमें वो जलीय तत्व ज्यादा हो जाते हैं, जैसे उन्होंने बताया था कि वाटरी सब्सटेंसेस वो अपन अष्टमी चौदस को अगर हरि को नहीं लेते हैं तो वह वाटरी सब्सटेंसेस का बॉडी में बैलेंस बराबर होता है। तो ये सब एक एक चीजें हमारे जैन आहार से परिपूर्ण पोषण हमें मिलता ही मिलता है। और गारंटी से पूरा न्यूट्रिशन मिलकर के हम बरसों तक स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं।
और हमें अपने किए का सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन अलॉन्ग विथ सेल्फ रियलाइजेशन, यह हमारा मोट्टो है और वह इस जैन आहार से ही संभव है। कोई जिस प्रकार लहसुन खा करके उसे कस्तूरी की सुगंधित डकार नहीं आ सकती, उसी प्रकार मांसाहार या नॉन वेज प्रोडक्ट्स वगैरह या जो भी असावधान पूर्वक तामसिक आहार लेंगे, उससे कोई सम्यक दर्शन या आत्मानुभूति की भूमिका नहीं बन सकती है। इसलिए हमें जैनाहार पूरा न्यूट्रिशियस है, 100% उसके न्यूट्रिशंस मिलते ही मिलते हैं, शरीर भी फिट रहता है, मन भी फिट रहता है और आत्मानुभूति की भूमिका बनती है। तो इस मौके पर मैं सबको यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि टोटली जैन फूड इज फिट फॉर आवर बॉडी एंड टोटली न्यूट्रिशियस, नथिंग इज लेस, टोटली परिपूर्ण आहार है जैनाहार। और अहिंसा का आहार होने से हमें इसका हमेशा प्रमोट करना चाहिए और हमें इसकी खुशी होनी चाहिए कि हम अहिंसक आहार से जीवनचर्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यहाँ पर अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। Thank you, Dr. Deepak. That was very informative. We will now have a 15 minutes question and answer session. Feel free to ask in any language, Gujarati, Hindi, or English, and we will try our best to answer your question. Let me start. So I have a question for Dr. Deepak. I went to Kerala and I've seen this myself, that the Ayurvedic medicine, they're using animal products. What they're doing, they're chopping the leg of a young goat, they're boiling it, and then they're making medicine. Now, I am sure not all Ayurvedic medicine has got animal products, or not all Ayurvedic medicine has got steroid, because a large percentage of Ayurvedic medicine has got steroid. So can you please tell us which Ayurvedic medicine or which make is good for us to consume? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखो, ये तो एक अभी जो आयुर्वेद हम करते हैं, ये आयुर्वेद वैदिक संस्कृति का है और इसमें मांसाहार का भरपूर प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में सिद्धांत है द्रव्य सामान्य, किसी को खून कम हो रहा है तो खून पिलाओ या खून की औषधि दो, मांस कम हो रहा है तो मांस उसको खिलाओ। ये है द्रव्य सामान्य। गुण सामान्य कह रहे हैं कि आपको मांस नहीं खाना है, ठीक है, हम मांस की जगह आपको माश खिलाएंगे। माश मतलब उड़द। उड़द में गुण है। कौन से गुण है? जो आप मांस खाते हो वो मांस में, उड़द में मिल जाएंगे आपको। उड़द है, इसमें टोटली मांस में जैसे बहुत ज्यादा प्रोटीन है या जो भी चीजें हैं वो सब आपको उड़द में मिल जाएंगी। गुण सामान्य बोलते। तीसरा कह रहा है हमें गुण सामान्य भी नहीं चाहिए, तो कह रहे कर्म सामान्य, कि ऐसी कोई क्रियाएं हैं, कह रहे हाँ ऐसी क्रिया करो, आप एक्सरसाइज करो पर्टिकुलर टाइप की, जो आपके सिक्स पैक्स बन जाएंगे, मतलब मांस बढ़ जाएगा, ऐसी एक्सरसाइज कर्म करो। कर्म तो वो क्रियाएं करवाते हैं। तो हमारा जो आयुर्वेद अभी वर्तमान में है उसमें नॉनवेज प्रोडक्ट्स बहुत यूज होते हैं, इसलिए हम जैन वैद्य अपने अहिंसक पार्ट को उसको वो लेते हैं प्रयोग में। जैसे हमारे इसमें 2 इंद्रिय जीवों के प्रवाल है, शंख है, ये सीप है, मोती, ये पर्ल वगैरह होते हैं, ये सब कल्टीवेटेड होते हैं और ये सब आप देख सकते हैं सब 2 इंद्रिय जीवों के कवच होते हैं। शंख होता है तो वह भी समझ लो उसके अंदर के कीड़े को मारे बिगर मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत से हमारे इसमें मराइन प्रोडक्ट्स का हो, समुद्री जीवों का प्रयोग होता है। बहुत सारी ऐसी, जैसे इन्होंने बताया गोट का वो, तो बकरे के अंडकोशों से वानरी गुटिका वगैरह ऐसी औषधियां बनती जो पौरुष शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो इसलिए बीच में ऐसी भी आई थी कि भाई कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन में मांसाहार बहुत ज्यादा है, नियम से है। और इसलिए ये आपको जितने भी हमारे लिक्विड प्रिपरेशन है उसमें आसव अरिष्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये सब में एक सुरा बीज डलता है और उसमें इल्लियां हो जाती हैं मधु के फूल के माध्यम से। एक फूल होता है मीठा सा, उसके माध्यम से उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, तो तैरने वाली इल्लियां दिखती हैं और उसको फिर सेपरेट करके और वो लिक्विड प्रिपरेशन बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो आयुर्वेद है वो जैन आयुर्वेद का हिस्सा है, सो बात है ही नहीं। हमारे जैन संतों ने लिखा हुआ आयुर्वेद में सिर्फ एक ग्रंथ मिलता है, कल्याण कारकम उग्र दित्ताचार्य का।
और उस पे एक भी नॉनवेज चीज नहीं है। रस शास्त्र जो है वो जैन आयुर्वेद का हिस्सा माना जाता है, नागार्जुन उसके रचयिता हैं, वो भी माने जाते हैं कि जैन थे। और बाकी जितने भी अभी मेडिसिन हैं वो अधिकांश समझ लो कि हिंसक चीजों से बनती हैं, प्रोसेस में भी हिंसा बहुत बार हो जाती है। तो हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि अहिंसक रूप से हमें आयुर्वेदिक लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका था स्टेरॉइड्स। देखो स्टेरॉइड्स हार्मफुल भी होते हैं और हार्मलेस भी होते हैं। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, बहुत से मेटेलिक प्रिपरेशन होते हैं जो किडनीज वगैरह को डैमेज कर देंगे अगर सिस्टमेटिक नहीं बने तो। लोह भस्म यूज करते हैं हम, लोहा पारद को यूज करते हैं, मर्क्यूरी को, आर्सेनिक सोमल से उससे सोमल भस्म बनाते हैं। तो ये सब जहर हैं। धतूरे से दवाइयां बनाते हैं हमारे इसमें, धतूरा अगर कोई ऐसे ही खा जाए तो मर जाए। तो कहने का मतलब इनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, शोधन मारन इनके प्रोसेस होते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर मेडिसिन से कॉम्बिनेशन बनने पे उसका जहर खत्म हो जाता है। ऐसी कोई कच्चा पारद खा जाए, मर्क्यूरी खा जाए तो उसको पूरा आंतों में परफोरेशन होके मर जाएगा। लेकिन उसी मर्क्यूरी को शोधन मारण किया जाता है, प्रोसेस होता है पर्टिकुलर, उसको अग्नि में इतना पुट दिया जाता है कि उससे हम चंद्र प्रभावटी आरोग्यवर्धिनी वटी बनाएंगे और वो बहुत अच्छी बॉडी के लिए हेल्थी और मजबूत होती है। तो ऐसे ही अश्वगंधा, शिलाजीत वगैरह ये स्टेरॉइड टाइप के कुछ मेडिसिन होती हैं जो टोटली हार्मलेस होती हैं। स्टेरॉइड मतलब इसमें बहुत ज्यादा रूप में उस टाइप के उत्तेजक और ताकतवर्धक शक्तिवर्धक पदार्थ होते हैं, लेकिन ये किडनी को डैमेज नहीं करते, लीवर को डैमेज नहीं करते, टॉक्सिक नहीं होते। और बाकी जो ऐसे केमिकलाइज्ड अगर कोई टॉक्सिक वाली चीजें रहेंगी और वो प्यूरिफाई और एज प्रोसेस जैसा बताया वैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो वह नियम से डैमेज करेगी। तो इसलिए ये वैद्य की जिम्मेदारी बनती है, मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी मेडिसिन का अगर वो प्रयोग करता है तो उसे वह खुद को विश्वास होना चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। मैं अपने प्रयोग में जनरली मेटेलिक प्रिपरेशन यूज नहीं करता क्योंकि उसके रिस्क बनते हैं कि अगर जैसी प्रोसेस बनाई वैसी नहीं बने तो पेशेंट के जीवन से हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। ऐसी मैं अपने जीवन में कभी अहिंसक औषधि मतलब हिंसक वाली जो अब मैंने बताई गोट वगैरह या ऐसी गोमूत्र वाली इनका भी प्रयोग नहीं करता। इसकी सबकी हमको इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन से इसमें मुर्गी के अंडे का प्रयोग करते हैं, मधुमालिनी वसंत में होता है, बहुत से मेडिसिन में शहद का प्रयोग होता है। तो ये सब चीजों में सावधानी हमें रखनी पड़ती है। हाँ, yeah. Now let's take any other questions from the audience. I can see some of you have questions. Turn on your videos so we can see you. मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे, न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन उसके हिसाब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे B6, B12 इनके बारे में मैंने राय दी कि भाई ये प्लांट्स में भी मिलते हैं, उतने लेवल पे नहीं मिलते जितने नॉनवेज में मिलते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन सद जाता है, इतना क्वांटिटी में मिल जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे आपने कहा, like as you said, that the human body is not designed to consume any form of a different sort of an animal enzyme. Animal enzyme is not the correct word. Enzymes which animals can digest. The enzymes found in the human body and in the animal body are different. So the digestive capacity is different. For example, if you take anything which is made in the laboratory, it could be a tablet of vitamin A, vitamin E. As I said earlier, that vitamin A made in the laboratory, only 30% the body can use, and 70% the body has to throw it out. So it is important to consume it in a form that the body can absorb it. So for example, even if you're taking vitamin B12 coming from an animal source, not necessarily you are able to digest it. So there is a few years ago, like on television, there was a lot of advertisement to consume eggs.
anda cow, there was that ad, I remember, that everybody was sitting on the table. But the reality is, although it contains protein, can you digest that protein? Let's take another example. In mother's milk, like of a human female, the protein structure is different compared to the protein structure of a female cow. So after a certain age, the human body is not really supposed to be consuming milk in a large quantity. The reason is that a cow lives for only 25 years and a human will live for 75 to 80 years. So when you consume a lot of cow's milk, what happens that we start to get those hormones. And because we start to get those hormones, naturally the body starts to react in that way. So it is important to understand what sort of structures we can consume. For example, in coconut milk, the protein structure is similar to that of mother's milk, of the human milk. So it is far more useful for the human body to consume coconut milk as compared to cow's milk. So this is one example. Like that, there are many examples. And another important thing that needs to be stressed on, that don't take a bottle of vitamins and minerals just for the sake of it, because this is damaging to your liver and you don't really need it. And looking at it from Jain perspective, we're doing hinsa when it's not benefiting the physical body. In fact, it is just making the mind weak. Any other questions? We have a few more minutes remaining. I think everybody has understood everything, which is really good. And we hope that you imply it in your life. And more importantly, it is important to understand that what Acharya Bhagwan has written is completely and 100% true. So rather than doubting it, we should try to understand, because he will never write something which is not good for the mind, body, or for Atmik Anubhuti. Taking that as the concluding line, we would like to end today's session, and maybe in the future we can have more sessions like this to create awareness that in reality the Jain diet is in fact the best diet, simply because it is not only working on the physical body but also on the mind. And if the mind is strong, naturally we will be progressing towards the spiritual requirements or Atma Anubhuti, which is the reason why we have gathered today, not only to understand how it is working on the physical body, as we know that the physical body is Pudgal. And we cannot change it, no matter how many good items we might be eating or how many good amount of good vegetables or fruit we might be eating. If this asata no uday, it might not even work. But this is just to create awareness that we should not resort into taking harmful medicines or the wrong type of food at the wrong time, because we think it is helpful for us. I have one homework for all of you. I want you to Google the organ clock. Google the organ clock and you will realize that this organ clock is working in our favor and it is totally in line with the Jain principles. Thank you, and Jai Jinendram. Have a nice evening. Good night.